हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एमिल डुर्किम के बारे में बात करूंगा। आई विल टॉक अबाउट लिटिल हिज बायोग्राफी एंड देन आई विल टॉक अबाउट important books he wrote and then important theories of Emil Durkheim and basic fundamental analytical aspect of all those theories, right? And I'm requesting those who are from core sociology background, they can watch this video definitely. But this video is basically for those who are from non core sociology background, the students who are from engineering background, the students who are from other social science subjects, for an example geography, political science, okay, and from history. So I am making this video for those, okay. And get sociology जो syllabus है, तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, बहुत इन डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ। एंड वहाँ पे मैंने बताया था कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। तो चलिए एमिल डुर्किम के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। You will get one question at least from Emil Durkheim concept and his theoretical understanding about sociology and his contribution. So the first thing I want to tell about Emil Durkheim is that he was from Eastern France, okay, Eastern France, okay, and there was a small town, Epinal, okay, and he was born on like 15 April, okay, 15 April 1858, okay, and he was from a Jewish family, okay, and his father was a rabbi. rabbi किसी को पता है? rabbi मतलब होता है जो रिलीजियस टीचर है, ओके, स्पिरिचुअल लीडर है, तो वो होता है rabbi, ओके। एंड हिज फादर वाज ए rabbi in that particular community, okay, in that place, okay. So now I will talk about his PhD thesis, the PhD thesis of Emil Durkheim, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने सोचा था इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में रिसर्च करेंगे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा उसको स्लाइडली चेंज किया आइडिया को। तो ही मेनली फोकस्ड ऑन individual and society, the relationship between individual and society। again once again I am repeating, तो या ये ध्यान में रखिए, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। what was his PhD thesis dimension, okay। तो तो वो अगर किसी को याद रह जाएगा ना, तो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस ऑफ गेट पेपर, ओके। तो his PhD thesis was on the relationship between individual and society, okay। So he worked on that particular idea, and finally he decided that he will work on the relationship between individual personality and social solidarity, okay. Once again I'm repeating, finally he decided that he will work on the relationship between individual personality and social solidarity। तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में तो सबको पता है, हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का परसेप्शन अलग होता है, आइडियोलॉजी अलग होता है, ओके। देयर मे बी सम कॉमन थिंग्स, बट इंडिविजुअल पर्सनालिटी बहुत अलग होता है, ओके। कभी कभी एक भी हो सकता है। बट सॉलिडेरिटी के मतलब क्या है, सोशल सॉलिडेरिटी के मतलब क्या है? एज पर एमिल डुर्किम, सॉलिडेरिटी मीन्स द कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, bond, okay, the connection between individuals, connection between persons, okay। So that is the solidarity। तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया था, बहुत डिटेल्स में बात करेंगे आफ्टर आफ्टर द like I will speak first important books, okay। तो first I will speak on some important books that books he wrote
बहुत इंपॉर्टेंट है. यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स एंड नेम ऑफ द ऑथर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन. तो एमिल डुर्खिम ने कुछ बुक लिखा था. सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके बारे में बात करूंगा. फर्स्ट इज डिविजन ऑफ लेबर. Division of Labor. He wrote this book in 1893. Again repeating, Division of Labor. He wrote this book in 1893. उन्होंने 2 साल बाद और एक बुक लिखा था. Okay, so what was that? The Rules of Sociological Method. The next book, The Rules of Sociological Method, 1895. Right? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ओके, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा था, सुइसाइड. राइट, सुइसाइड, 1897. ओके, these 3 books you should remember. ओके, these are the 3 books. और भी 2 3 4 बुक के बारे में बात करूंगा, बट प्लीज, ओके, please keep a note on the name of the first 3 books: Division of Labor, Rules of Sociological Method, and Suicide. Other 4 books, for an example, Primitive Classification, 1903, The Elementary Forms of Religious Life, again repeating, The Elementary Forms of Religious Life, 1912. Okay, and I will tell you the name of the 2 books, and these books were published after his death. These books were published posthumously. One is Education and Sociology, another one is Sociology and Philosophy. These are the books you should keep remember. तो अभी मैं इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में बात करूंगा, सो ध्यान से सुनिएगा. यू कैन टेक ए नोट ऑन दिस कंटेक्स्ट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है सॉलिडारिटी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरी है सोशल फैक्ट्स. थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी है लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल से मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट सुसाइड. उसके बाद उन्होंने रिलेशनशिप क्रिएट किया था एडुकेशन एंड सोशियोलॉजी के बीच में, बट दैट इज ओके. बट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू स्टडी 3 key contribution in that particular subject, sociology. Okay, that एमिल डुर्खिम ने दिया था. फर्स्ट इज सॉलिडारिटी, सेकेंड इज social facts, third is suicide. All these are theoretical understanding. ये सिर्फ word नहीं है. Okay, solidarity is just not a word. It's a theoretical understanding. He observed these things, right? So anyway, so चलिए solidarity के बारे में बात करते हैं. Solidarity क्या है? What is solidarity? Solidarity means bonds between individual, connection between individuals. Okay, so he observed a lot. He observed the society. He understood the society. गांव में क्या है, शहर में क्या है. He observed all these things. That's why I love this subject. I love this subject. चलिए बात करते हैं in detail solidarity के बारे में. Again, I am defining what is solidarity. Solidarity means this is not coming from my brain. Okay, this was given by एमिल डुर्खिम ने. ये जो definition है. Okay, solidarity means as per एमिल डुर्खिम the connection between individuals. Okay, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. कनेक्शन बिटवीन पर्सन्स, कनेक्शन बिटवीन सिटीजन्स, राइट? दैट इज सॉलिडारिटी. बट डुर्खिम एनालाइज्ड इकोनॉमिक सॉलिडारिटी, सोशल सॉलिडारिटी in the book The Division of Labor in the Society. He was curious.
He was interested to understand the forces, the factors that are actually controlling your life, my life, our life, right? बहुत इंटरेस्टिंग है. There are so many societal factors that are controlling your thoughts. तो डरखिम ना, Emil Durkheim actually interested to understand these forces, these factors which are controlling your thoughts, your decisions, right? So he categorized these solidarity concept in two things. First is mechanical solidarity, and second is ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या है मैं डिस्कस करूंगा, देन मैं डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा. तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी अगर समझना है, पहले तो सोसाइटी के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज दैट जो छोटा सोसाइटी होता है ना, गांव होता है, जो स्मॉल विलेज, तो वहां पे क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन, कनेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है. ओके, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बहुत मिनिमल होता है. ओके, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ वन इंडिविजुअल बहुत कम होता है, क्योंकि गांव में ना एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहता है, राइट? तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बहुत कम होता है, बट दे आर एक्चुअली एम्बेडेड इन दैट सोसाइटी. डिग्री ऑफ एम्बेडेडनेस बहुत ज्यादा होता है गांव में, राइट? और क्या होता है वहां पे, कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी वो बहुत डीप होता है, बहुत डीप होता है? तो ये एक बहुत बड़ा बात उन्होंने लिखा था मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में. तो इन द स्मॉल सोसाइटीज विथ मैकेनिकल सॉलिडारिटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इज मिनिमल. ओके, इज मिनिमल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां पे ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड कुछ फंक्शन नहीं है जो लार्ज सिटी, लार्ज टाउन में होता है. तो आई विल डिस्कस द ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, देन यू विल गेट द सेंस, राइट? The first thing I want to discuss about mechanical solidarity is related to the small society, and then you have to remember two more things. The degree of connection between individual to the society ये बहुत ज्यादा होता है, but individual autonomy, freedom of one individual बहुत कम होता है, right? As compared to city, as compared to town, right? These are the important characteristics you should remember, you should study, you can take a note, right? So now I will discuss about organic solidarity. तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या है, अगेन डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बहुत बड़ा जो शहर होता है, बहुत बड़ा लार्ज सिटी के बारे में अगर बात करूं तो दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. वहां पे द कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ओके, कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ओके, वो बहुत लेस होता है. डिग्री ऑफ कनेक्शन, ओके, इज मिनिमल इन सोसाइटी, राइट? अगेन कनेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल वो भी लेस होता है, राइट? वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट? बट गांव में ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट होता है. इवन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैं बताऊंगा. वहां पे पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, they will play all these are the factors, all these are the institution will play an important role. Okay,
one more important characteristics of that of these things is that division of labor. डिविजन ऑफ लेबर है, जो लार्ज सिटी होता है डिविजन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग काम करता है सिटी में, बट गांव में सिंपल एक खेती बाड़ी. तो ये जो डिफरेंस है, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फर्स्ट, एंड दिस इज द थिंग्स वी नो, दिस थिंग्स, द facts, we know all these things, we observed. But Emil Durkheim was the first one who theorized, who wrote about it. Okay, again I am trying to differentiate what is mechanical solidarity, what is organic solidarity in terms of labor of division. देखो, जो गांव होता है वहां पे डिविजन ऑफ लेबर ज्यादा नहीं होता है, लेस होता है. ओके ओके, बट जो बड़ा सिटी है, टाउन है, वहां पे many people will do many things. Municipality, in the municipality you will see that the few peoples are working there, and you will see the specialization. Okay, someone is working with the sanitation, someone working is with the solid waste management, something like that. Okay, so again, in the slum, in the city, you will see the different peoples are doing different things. In the corporate world, you will see they are doing different things. Someone is managing the office, someone is taking care of the international relation, HR, someone is related to recruitment, managing other companies and so on. तो ये जो डिविजन ऑफ लेबर है, ये बहुत ज्यादा होता है शहर में, राइट. तो these are the important things you should remember. Again, I am briefing right now. So what are the important features in terms of mechanical solidarity? ये small society related है. ओके, सो यहाँ पे इंडिविजुअल जो ऑटोनॉमी होता है बहुत कम होता है. बिलीफ्स इन द सोसाइटी बहुत ज्यादा होता है. कनेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ये भी बहुत ज्यादा होता है, राइट. कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये भी बहुत ज्यादा होता है. तो लेस क्या होता है? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बहुत लेस होता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी में, राइट. और क्या लेस होता है? वहां पे ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, राइट. गांव में, ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल एरिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मैकेनिकल सॉलिडारिटी, राइट. एनीवे, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज रिलेटेड टू लार्जर सोसाइटी, जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर यू विल सी लार्जली. ओके, जहां पे individuals like the connection between two individuals बहुत लेस होता है. ओके, कनेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल वो भी बहुत लेस होता है ऑर्गेनिक जो सॉलिडारिटी होता है वहां पे. एंड वहां पे स्पेशलाइजेशन होता है. फॉर एन एग्जांपल लाइक political, legal, economic institutions, all these are specialized factors, and these will control your life. Okay, so these are the few things. Okay, so now I will talk about social facts. Social facts क्या है? तो he theorized about social facts. For Durkheim, social fact means like fact. He defined social fact as ways of acting, ways of thinking, and like and feeling external to the individual. Okay, and Durkheim actually took social facts as objects. There are several characteristics of social facts. For an example, externality, constraint, independence, generality. These are the important characteristics you should remember. Okay, these are from these actually Durkheim actually theorized about this thing. Okay, so
इसके बारे में यू कैन रीड a lot, okay, from different text and so on. बट अभी जो जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है सुसाइड. So can you imagine someone is observing this fact only, right? So he observed these things in the society. Okay, so one thing about Emil Durkheim, he was very clever, very intelligent. Okay, as a he was very intelligent. He was an intelligent student during his school academic life. Okay, he is also a depressed person. Okay, he faced lots of problem from different people, different organizations, so on, right? So he observed this suicide phenomena from a larger context, from a larger lens, right? He categorized this suicide concept. Okay, and as per his understanding, he categorized suicide into four types. He gave four types of suicide, right? One is egoistic suicide. One is altruistic suicide. Another one is anomic suicide, and fourth one is fatalistic suicide, right? So these are the four types of suicide he talks about. He actually talked about in his book suicide, right? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है. दो फर्स्ट जो कैटेगरी है, लाइक इगोइस्टिक सुसाइड एंड अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, he actually uh, he actually talked about on the basis of level of integration of the individuals, level of social integration. Okay, level of social integration. But last दो कैटेगरी जो है, anomic suicide and fatalistic suicide, he actually talked about these two types of suicide on the basis of social regulation, social control of individuals. Okay, the level of he actually described these things on the basis of the level of social regulation and control of individuals. ओके, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे. मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दीजिए. तो चलिए, ये जो फोर टाइप से सुसाइड है, इगोइस्टिक सुसाइड. So when one individual, when one individual or one person is not well integrated into a social group, so it can lead to a feeling that they have not made a difference in anyone's lives. Okay, so it means that, so this type of suicide, egoistic suicide, corresponds to a low level of social integration. Are you getting my point? Egoistic suicide correspond to low level of social integration. So this type of suicide generally happens when one person is not connected well with the society, right? And altruistic suicide is completely opposite. this happen this happens when one person is too much connected to the society. Altruistic suicide correspond to much social integration. Okay, completely different, right? बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? Third type of suicide is like anomic suicide. Anomic suicide occurs when one has an insufficient जितना इंटीग्रेटेड रहना चाहिए सोसाइटी के साथ उतना नहीं है. तो एनोमिक सुसाइड occurs when one has an insufficient amount of social integration, right? बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो एनोमी वर्ड है, इसका एक्चुअली मीनिंग है ए सेंस ऑफ एमलेसनेस. ओके, चलिए नंबर 4,
फोर्थ टाइप ऑफ सुसाइड के बारे में बात करते हैं, फैटलिस्टिक सुसाइड। इट एक्चुअली रिजल्ट्स फ्रॉम टू मच सोशल रेगुलेशन, टू मच सोशल रेगुलेशन। ओके, तो ये जो चार प्रकार का सुसाइड है, तो ही ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट समवन हु ऑब्जर्व्ड सुसाइड, okay, and he theorized this idea and he wrote a book. Can you believe this? So several things are happening in our society, just you have to observe, and if you have the writings, good writing skills, so then you can wrote a book, right? So anyway, and was the first person Emil Durkheim was the first person who actually uh, isolated sociology subject from philosophy. This is one of the great contribution to that subject, to sociology. And one more contribution is that he was the first one, Emil Durkheim was the first person who tried to establish sociology as a science subject. He was someone who tried to connect sociology and education. Sociology and he tried to establish these two things, okay, education and sociology. So anyway, I think this is enough for today about Emil Durkheim and his contribution and his theoretical understanding uh, to sociology. I think this will help you a lot. If you like this video, please hit the like button. And if you want to get many more videos like this, okay, so uh, press the bell icon so that you will get notification from my YouTube channel when I will post any videos, and you will get some information. So I think this will help you to prepare get 2024. Okay guys, that's all from my side. Jai Hind, Bande Mataram.